Hello students, welcome to the class of English. Students, you are again here to learn something new. आज हम सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स को लिखना। अभी तक हम फॉर्मल लेटर्स लिखना सीख चुके हैं, तो बारी है इनफॉर्मल लेटर्स की। Do you know the difference between formal and informal letters? Formal letters are usually written for business purpose. Formal letter को business letters भी कहते हैं. While an informal letter is a personal letter, जिसमें हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से इनफॉर्मल वे में बातें करते हैं या कुछ कहते हैं। Now let's see the format of an informal letter. An informal letter is a bit different from that of formal letter. The format of informal letters consists of the following. They are date, sender's address, receiver's address, salutation, introduction, middle, conclusion, at last, name of the sender. तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं डेट, द पर्टिकुलर डेट जिसमें हम लेटर को राइट कर रहे होते हैं। नाउ कम्स सेंडर्स एड्रेस, जिसमें हम खुद अपना एड्रेस लिखते हैं। फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस आप समझ सकते हैं कि जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस। सैल्यूटेशन, इन विच वी राइट डियर, आफ्टर दैट टू whom the letter is written। जैसे अगर आप लेटर अपने ब्रदर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर ब्रदर। फिर आता है बॉडी ऑफ द लेटर, which includes introduction, middle and conclusion. At last, name of the sender, जिसमें हम अपना नेम लिखते हैं। So this was the format of the informal letter. Today we will write an informal letter. Let's see what is the question. The question is, write a letter to your friend inviting him or her for your sister's marriage. You have to write a letter to your friend, जिसे आप invite करेंगे for your sister's marriage. We will follow the format and write a beautiful letter. First of all, date. Here I will write any date. After that, sender's address, जिसमें हम अपना एड्रेस लिखेंगे, जलालपुर अंबेडकर नगर. Now comes receiver's address, जिसमें हम लिखेंगे 33 5th Avenue, 4th Cross Road, Mumbai, Maharashtra. I have mentioned a common address, but while writing you will write the address of the receiver. Now comes salutation. अब because हम लेटर लिख रहे हैं to our friend, so here we will mention dear friend. अब बारी है body of the letter की, तो हम introduction में लिखेंगे Hope this letter finds you in the best spirit. I am also doing well. In the middle we will write, I am writing this letter to invite you on the occasion of my sister's marriage on November 15, 2020. After that the conclusion we will write, we will be glad if you come with your family. फिर हम लेटर को क्लोज करेंगे, writing with love. After that, आप अपना नेम मेंशन करेंगे. So the letter is complete now. देखा आपने लेटर कितना अच्छा लग रहा है? Whenever you write a letter to someone, follow this format to make it more attractive. So students, एक लेटर हमने कंप्लीट कर लिया है, but अब एक आप खुद से करेंगे. That I will give you in your homework. The question is, write a letter to your grandmother, thanking her for the birthday gift. आप एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप थैंक यू बोलेंगे अपनी ग्रैंडमदर को, जिन्होंने आपके बर्थडे पर एक सुंदर सा गिफ्ट दिया। So students, हमारी आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। कल हम फिर मिलेंगे for a new topic to be covered. Till then, take care and study properly. Bye.